Yes, the answer first for is answer number C. Keeping a track of everyday activities like exercise and sleep. ठीक है? Health devices are useful for these things. Next, medical practitioners' advice is that we should measure health by all of the above: physical fitness, mental fitness, social well-being. ठीक है? The drawbacks of health devices are they cause pressure and anxiety, as it is words दिए हुए हैं पैराग्राफ में. Cause pressure and anxiety in the users. ठीक है? आंसर फोर्थ का आंसर बताओ. We should assess our health by which of the following? पैराग्राफ में जो दिया है वो बताओ. Using health gadgets, talking to a doctor, listening to our own body, asking family and health experts. What is given in the paragraph? The answer is listening to your own body. ठीक है? Okay, now this question is important. The fifth one. Find the words in the passage which are similar in the meaning to the ones given below. First है dimensions. Dimensions से ऐसा कौन सा word है जो relate होता है which is given in the paragraph above? बताओ. Aspect. And where is it? Tell me. Or dimensions. It is parameters. है क्या? सेकेंड पैराग्राफ में देखो 1 2 3 4 5th लाइन पैरामीटर्स. ठीक है? यहाँ पर भी पैरामीटर्स है. So I think this is a more appropriate one to dimensions. Write down parameters. तो ऐसे आपको वर्ड्स फाइंड करने हैं जो पैराग्राफ में दिए हुए हैं. अप्रोप्रिएट वन रहा था. नेक्स्ट इज सुपरवाइजिंग. बताओ इसका कौन सा वर्ड दिया हुआ है पैराग्राफ में? वेयर इज इट? मॉनिटरिंग. ओके, you can write it, but I'm just saying that parameters is a more appropriate one. Aspect is also not wrong. Yeah, I feel so. This is more appropriate. Yes, next last passage. Kindness and politeness are not overrated at all. They are underused. चलो इसके आंसर्स बता दो क्विकली. ये भी मैंने होमवर्क के लिए दिए थे 2 पैराग्राफ्स. We are becoming increasingly rude because social media encourages such behavior. Answer number C. कर लो टिक मार्क. Next, in many reality shows like Big Boss and Roadies, the winner is nasty and discourages. ये पैराग्राफ में दिया हुआ है ना? पैराग्राफ पढ़ा होगा तो यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, नेक्स्ट का आंसर बताओ. These days it is fashionable and cool to be ill-mannered and answer number D. Next, pick out the words from the passage which means the following. Skimming, इसका क्या है? हाँ, conniving और cunning, ये दोनों लिख सकते हो. conniving और cunning. थर्ड लास्ट लाइन पे दिए हुए हैं दोनों वर्ड्स, कनाइविंग और कनिंग. ठीक है? दिस इज द वन फॉर स्किमिंग. नेक्स्ट, इमेजिन विकेरियस. यस, दिस वन. तो सेंटेंस क्या लिखा था? पीपल गेट विकेरियस प्लेजर इन वॉचिंग द कंटेस्टेंट्स स्लिंग मड ऑन ईच अदर, फ्लिंग स्लीजी एक्विजिशंस ऑन अदर्स. ठीक है? So these are the 2 words. Done? So this is all about chapter 4. अब मॉड्यूल में आपको कुछ 2-3 एक्स्ट्रा पैसेजेस दिए हुए हैं. यू कैन प्रैक्टिस दैट. ठीक है? इन द मॉड्यूल इट इज गिवन, सो वो प्रैक्टिस कर लेना. नाउ कम टू चैप्टर नंबर 6. फर्स्ट वील फिनिश दैट. इट इज अ लिटिल इजी. फिर चैप्टर 5 पर आएंगे.
चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ राइटिंग। ठीक है, अब इसमें भी प्योरली देयर इज रीडिंग, सिर्फ एक ही आंसर है विच इज फॉर थ्योरी, दैट आई विल टेल यू। ठीक है, मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, यू ऑल्सो जस्ट हैव टू प्योरली रीड इट। ओके, language has 4 basic components: listening, speaking, reading and writing. A child first listens to the conversations around him or her and then repeats the sounds and words which have been learned from the environment. Thus, the next step is learning to speak. Thereafter, the child begins to recognize alphabets and words and starts to read. The last skill is to be mastered is that of writing. Beginning from writing alphabets, then words, moving on to sentences, paragraphs, and finally producing complete written compositions on their own. The process takes many years for the individual to master. ठीक है, so ये सब basic है. हाँ, come to this point. Steps for writing, ये भी purely this is also for reading. ये भी this is also not a theory question. ठीक है, जो theory question आएगा that I'll tell you. Okay, now what are the steps for writing? अब आप कुछ भी लिख रहे हो, you're writing a letter, you're writing an article, whatever it is, essay लिख रहे हो, ये सबके लिए काम आएगा. ठीक है, बेसिक है, जनरल है. See, the first one is, first you need to select a topic. The process of writing begins by selecting a topic for writing. The selection may be made by a teacher, a manager, or by the writer himself. The first step is to have an idea, theme, issue, or subject matter clearly stated. ठीक है, so you just have to select a topic जिसके ऊपर आपको लिखना है. Next, brainstorming. This I would say this is the main step. The next step is to brainstorm. Once you know the topic you have to write on, random thoughts, ideas, info related to it begin to crowd your mind. तो आपको एक logical way में उन सारे ideas को, thoughts को gather करना है. Next, this is what I was talking about, organizing your content. So you have to put it in a particular format. देखो लिखा है, put all the subject matter that can be included in that point under the subheading. Next, decide the sequence or order. Create a diagram which helps you to organize your ideas appropriately. Some graphic examples are as follows. Okay, so this is one of the method you can structure your information. Supposedly, मैंने आपको टॉपिक दिया है, राइट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. ठीक है, सो यू मेक सम 5 to 6 पॉइंट्स. आपने यहाँ पर बीच में लिखा है बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस और आपने सारे सब हेडिंग्स यहाँ पर लिख लिए हैं. ठीक है, सो दिस गिव्स अ इंट्रोडक्शन कि आपका किसके ऊपर टॉपिक होगा. लाइक दिस इज द वे टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन. दिस इज कॉल्ड एज रे डायग्राम. नेक्स्ट देखो सीक्वेंशियल फॉर्म. आपने यहाँ पर सब हेडिंग लिख ली और उसके नीचे एज इट इज सारे पॉइंट्स लिख लिए. नेक्स्ट, कंपैरिजन, या आप डिफरेंसेस लिखते हो, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन और व्हाटएवर इट इज. So this is the way you differentiate two ideas. Next is, this is the problem, this is the solution. मैंने आपको global warming के बारे में बोला है लिखने के लिए. So this is, you will write the problem over here, then you will write the solution in a paragraph form. Next is cause effect. Again, simple writing है ये. Okay, now come to this point directly. Styles of writing. यहाँ से main chapter start होता है. Come to the styles of writing part. Okay, now you see there are 4 styles where you can write your para about. अब ये differ करेगा. First देखो is expository. अब ये वाला style कब काम आता है? Let us read. This kind of writing is writing that seeks to explain, illuminate or expose, which is where the word expository comes from. The main purpose of this type of writing is to spread information. The writer's opinion, emotions, biasness have no place in it. इसको अंडरलाइन कर लो कि मैं क्या सोचती हूँ. This is immaterial. Facts will be facts. ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ताजमहल. अब मैं ताजमहल के बारे में क्या सोचती हूँ वो हमको इंक्लूड नहीं करना है. ताजमहल क्या है, किधर है, हाउ डज इट, कैसा दिखता है, देखो वो पूरा इंफॉर्मेशन दिया है. सो दिस यू विल कॉल दिस एज एक्सपोजिटरी स्टाइल ऑफ राइटिंग. पढ़ लो एक बार पूरा आर्टिकल इसके बारे में, ताजमहल के बारे में. नाउ इफ यू सी, सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं. फैक्ट्स हैव बीन अंडरलाइंड. इट वाज मेड बाय मुगल एम्परर शाहजहां in 1631. It took 20 years to complete. 20,000 artisans and 1,000 elephants were employed in the construction of the monument. It has a height of 240 feet. फिर कौन से स्टोन्स वगैरह जो भी यूज किए गए थे
ये लिखा हुआ है। सो सब कुछ फैक्चुअल है। द कॉम्बिनेशन ऑफ लश ग्रीन सराउंडिंग्स, रेड बिल्डिंग्स, व्हाइट मार्बल मॉन्यूमेंट, ब्लू स्काई क्रिएट अ पिक्चर ऑफ अनपैरेलल्ड ब्यूटी। ठीक है। सो इफ यू आर सपोज टू राइट ऑन समथिंग सच एज ताजमहल या कोई भी आता है आपको मॉन्यूमेंट के ऊपर लिखने के लिए, सो यू विल जस्ट इंक्लूड द फैक्ट्स विच आर देयर। इसमें आपका ओपिनियन, आपके इमोशंस, आपका बायसनेस, दे हैव नो प्लेस इन इट। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग। कम टू द नेक्स्ट वन, आर्ग्यूमेंटिव और पर्सुएसिव, कुछ भी बोल सकते हो। नाउ सी, टॉपिक ही आपको वैसे दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज सेफ्टी फर्स्ट इन मोबाइल यूज। तो यहाँ पर व्हाट यू फील, योर ओपिनियन विल मैटर ओवर हियर। करेक्ट। देखो, द एम ऑफ पर्सुएसिव राइटिंग इज टू कन्विंस एंड इन्फ्लुएंस अ रीडर। इसको हाईलाइट कर लो। जब आप ये आर्टिकल पढ़ोगे, सो इट शुड कन्विंस यू एट फर्स्ट। ठीक है। सो आपको उस तरह से स्ट्रक्चर करना है। कन्विंस और इन्फ्लुएंस अ राइटर, a reader of a certain idea or position on an issue. Okay, पढ़ लो ये वाला पूरा आर्टिकल एक बार। Now once you read, you will find ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, राइट? अगर आप सिर्फ अंडरलाइन वाले भी पढ़ते हो, क्या लिखा है? टॉकिंग ऑन द सेल फोन while driving increases by fourfold your chances of meeting with an accident, right? More horrifying is the trend now among youngsters to read or send text messages while driving. Keeping the cell phone at least a couple of feet away from us when it is being charged or when you sleep is advocated. Advocated मतलब advised. Is our life so cheap and worthless that we risk it every day just because we fail to change our habits? वैसे लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन टाइप्स पूछे हैं, so that the reader, you know, actually thinks about it even once he is done reading. मतलब उसके बाद भी उसका वो thought चलता ही रहे. This is the a good way you present your information. लास्ट में क्या लिखा है? Please be safe always. ठीक है। So this is argumentative style of writing. This is the second style. Come to the third style. Third style में देखो क्या लिखा हुआ है? The name itself is descriptive. Okay, let me read. The style involves description of a particular action, object, person, place, etc. ठीक है। अब देखो, हमको वो ऐसे आते थे questions that you were standing on a bus stop for 1 hour. ठीक है, आपकी बस लेट आ गई, तो फिर आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ता था कि आपने वो 1 घंटे में किया क्या, राइट? सो दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। देखो यहाँ पर उसने टनल के ऊपर लिखा है। देखो, इट स्टार्ट्स व्हाट? आई पास्ड थ्रू एन एरिया वेयर द ट्रीज क्लोज्ड अ कवर अबव माय हेड एंड ओवर द रोड. द शेड फेल upon the hair on my exposed arms like a cold blanket. Not being in a direct sunlight, मतलब ये थोड़ा सा imaginative हो जाता है. Not being in a direct sunlight focused my attention back to myself. My breathing was elevated, my chest raised just a little more than usual on each breath. My hands were clamped in the tight grip around both handlebars, and the whiz of my tires was drowned out slightly by the constant moving air passing by my ears. Of course, this all vanished as I re-emerged from the tree cover. The warmth of the sun was experienced again as it tickled my arms and face. The gentle tugging the breeze did to my loose shirt felt like a nature's way of affection, almost like it appreciated my exploration of its glory. Okay, so this is nothing but you're just describing. देखो क्या लिखा है यहाँ पर? It is more about a description, is more detailed, personal, subjective. It is a vivid, use figure of speeches. ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा था ना,
It felt like a nature's way of affection. ठीक है, तो ये सब क्या है? These are figure of speeches. My chest raised. The gentle tugging the breeze. This is all imaginative. देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव कहाँ कहाँ काम आता है? इन पोइट्री, डायरीज, पार्ट्स ऑफ लार्ज स्टोरीज, नॉवेल्स, ट्रैवलॉग्स. Yeah, I don't know what is it is, but होता होगा कुछ. ठीक है, so this is which you visited. अच्छा, okay. So this is the third style of writing, that is descriptive, and the last one is narrative. देखो, narrative style is about storytelling, narrating a tale, dialogue, plot. It is usually fictional but can be non-fictional as well, as it depicts the real life events and stories. ठीक है, इसमें देखो ये दिया हुआ है पैसेज, लाइफ एट क्रॉस रोड. यू कैन रीड दिस. All this is just one read. ठीक है, now come to this question. Now I was talking about this question जो theory के लिए आ सकता है. Characteristics of good business writing. I think this is the last topic, right? ठीक है, so this can come. देखो, following characteristics need to be taken care of in business writing, as it is question आ सकता है. First देखो, clear purpose. People working in the fast-paced world have busy schedules and timelines to adhere to. They have no time to waste. Therefore, while drafting any written piece, ensure there is absolute clarity about the purpose. ठीक है, आप जिस चीज के बारे में लिख रहे हो उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए. Anything that is ambiguous or confusing is likely to be designed to trash bin. Underline करो. Anything which is ambiguous or confusing is likely to be designated to the trash bin. ठीक है, तो पर्पस क्लियर होना चाहिए, else it will be not clear. Next, clarity and conciseness. The aim in business writing is the effective communication of required information. Therefore, clarity and brevity is of utmost importance. What is brevity? मैंने आपको उस दिन बताया था, speaking more in fewer words. This is the quality of brevity. ठीक है, so underline these two words. Therefore, clarity and brevity is of utmost importance. 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है ये. Next, target audience. The audience you are writing for ascertains your language and tone. The manner in which you communicate with a superior, a colleague, a customer, or a service provider will differ. Do not use phrases and expressions that could be misunderstood. Tailor your content and words keeping in mind what your reader needs and wants to hear. ठीक है, तो सपोजिटली अगर मैं आपको कुछ ऑफर दे रही हूँ, तो ऑफर में इफ आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं क्या क्या लिखूंगी? द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, राइट? मैं एट व्हाट प्राइस आई एम विलिंग टू सेल, व्हाट डिस्काउंट्स विल आई प्रोवाइड. सो मुझे ऑलरेडी पता है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं डायरेक्टली वो सब लिख लेती हूँ. ठीक है, बिकॉज आई नो यू. सो यहाँ पर while drafting I have to target the audience whom I'm writing to, what information he will require. ठीक है. Next, suitable tone. One tricky aspect is the tone of the writer. It can easily be misinterpreted. Always be polite and courteous in your communication. Do not be over informal or friendly. इसको underline करो. Do not be over friendly. Next, appropriate format. Business modes of writing have specified formats. Letter, proposals, memos, and many other types of business writing follow standard format.
Avoid any kind of misinterpretation or confusion. The reader is able to quickly identify the purpose of the document. Okay, I think this is easy, not to explain anything. And the last one is personal opinion. Business communication is based on facts and figures. Underline करो इसको. तो इसमें आप क्या सोचते हो उसकी कोई जगह नहीं है. ठीक है. The writer's opinion or perspective on a matter does not carry any weight. इसको भी underline करो. His opinion does not carry any weight. He has to follow the company policy, avoid use of phrases like I think, I feel, in my opinion, etc. You're not supposed to include all these things. ठीक है. Now, अब देखो ऐसे आपको questions आएंगे एग्जाम में from this chapter. Okay, first question is, you visited the Google office in Delhi and were impressed by the building and infrastructure. Describe the office in your own words, stating your perceptions and feelings. फिर hint दिया जाएगा कि आपको किस क्या क्या include करना है. You have to include the location, that it was a huge building, 10 floors, interior tastefully decorated, plush furnishings, well ventilized and lighted, eco-friendly, ample office space for every employee. Okay, so these hints can be provided. Okay, not necessary every time it will be provided, but होता है usually. ठीक है. For today, for now rather, I am giving you one question. लिखो इसके बारे में. Write down a question. Take a question. ये जो Google Office का है ना, ये इसका आंसर मैं आपको कल दे दूंगी. I will make you all write this one. Now take a question. लिखो. Write an article. Write an article. Write an article emphasizing the need for. Write an article emphasizing the need for. Emphasizing the need for online classes. Emphasizing the need for online classes for students. For students in lockdown situation. Write an article emphasizing the need for online classes for students in lockdown situation. Bracket में लिखो 150 words. 150 words. Next line पर लिखो, make a bracket, write down hint. Now hint में I am giving you few points. Write down those points. First point है, ensure continuous flow of studies. Ensure continuous flow of studies. ये सब आपको चीजें इंक्लूड करनी है अपने आर्टिकल में. ठीक है. तो फर्स्ट हिंट क्या है? ensure continuous flow of studies. नेक्स्ट लिखो, does not hamper academics. Does not hamper academics. Does not hamper academics. थर्ड पॉइंट लिखो, makes one computer literate. Makes one computer literate. Makes one computer literate. Next point लिखो, makes children aware of technology. Makes children aware of technology. Makes children aware of technology. The last hint is, last point लिखो, location is no more an obstacle. Location is no more an obstacle. ठीक है. आई एम गिविंग यू 15 minutes. ये यहीं पर क्विकली लिखो. ओके. So the article question was, write an article emphasizing the need for online classes for students in lockdown situation. ठीक है. 150 words and there were some 4 to 5 hints. ठीक है. Education should be the only constant in one's life. It is vital for one's self-development, empowerment, and is the most important knowledge-gaining source. Thus, its perpetuity cannot be compromised with.
The unprecedented pandemic has forced us to adopt new ways of doing things. Since lockdown restricts offline teaching, educational institutions should commence with online classes so that the students are not deprived of education. This will ensure no loss in academics. Education is a fundamental right and it cannot be put on stake. Online mode of imparting knowledge will equip the teachers with computer literacy and make them technology friendly. You have to talk about children's, not about teachers. So you have, okay. A huge asset in today's world. The children also will get its implying benefits. The entire world is moving towards rapid technological development. Students will get first-hand experience of using technology and computer systems. Online teaching will remove all geographical barriers. Students from any corner of the world will get access to online learning. Since majority have smartphones now, online mode of education will lead to its efficient utilization and bring more number of learners into its horizon. Perfect, I would say. Very nice. Simple, sober, includes all the points and good framing of sentences. अब तुमने सुना तो तुमको बताओ कैसा लगा? तुम खुद को अपने आर्टिकल पे मार्क्स दोगे क्या? हाँ, पहले तो वो बताओ. देने की इच्छा होगी? So understand. अब इसमें कुछ मेरे लिए ऐसा explanation है नहीं that I sit and make you all explain. This is basic. This is 8th 9th का grammar I would say. ये आता था ना, English पेपर तो होता था ना, उसमें ये सभी होता था. So there is nothing new as such. Write down one homework question. ये अभी तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं होमवर्क दे रही हूँ. Write down the question. Descriptive style. Descriptive style. ये स्टाइल आपको बता दिया है कि कैसे लिखना है. डिस्क्रिप्टिव स्टाइल होना चाहिए. मेन टॉपिक है द परफेक्ट समर हॉलीडे होम. द परफेक्ट समर हॉलीडे होम. ठीक है, हाँ, द परफेक्ट समर हॉलीडे होम. यू कैन जस्ट राइट परफेक्ट समर हॉलीडे ऑल्सो. मतलब ये हॉलीडे आपने घर पर बिताया ये नहीं लिखना है. हाउ यू स्पेंट इट बस वही लिखना है. दे हैव जस्ट एडेड वर्ड्स. ठीक है, राइट डाउन दिस इन अ डिस्क्रिप्टिव स्टाइल. लिखोगे पक्के से, लिखने की कोशिश करोगे एटलीस्ट. कल संडे है टाइम आपके पास. नाउ लिसन क्लियरली. ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यू विजिटेड गूगल ऑफिस, ये मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगी इसका आंसर. वो भी लिख लेना बुक में, ठीक है. हाँ, 1.5 पेज. Yeah, you went to. Yeah, so I have my holiday. Yeah. Yes. Yeah. Kind of. Yes, you can interpret it that.